झाले हा कनेक्ट. Okay. Rajat, are you there? Anyways, a very good morning to all present here, all the participants. We have with us our speaker, CA Ravi Somani sir. And in fact, before we introduce sir, I would like to tell you one thing, and that is, he is the person who has designed this entire series of GST, and all the credit goes to him, as he's the key person in designing this entire series. And now we are fortunate enough to hear him today as well as tomorrow. So a warm welcome to you, sir. I request the chairman of Bhavnagar branch to kindly introduce CA Ravi Somani, sir. Good morning, everyone. I am feeling very pleasure to introduce CA Ravi Kumar Somani sir from Bhavnagar branch. I am a chairman. CA Ravi Kumar Somani is a qualified chartered accountant and LLB. He is extremely passionate indirect tax professional with experience in performing health check review, providing advisory and litigation support. He has given lecture at various trade and professional forums such as ICI, CII, National Insurance Academy, etc. He has authored 3 books on indirect taxes: Practical Guide to GST on Automobile Industry, Practical Guide to GST Audit and Certification, Self-Study Guidance to Indirect Tax published by Asia Law House. He has written various analytical and issue-based article, research paper, and legal updates on indirect tax matters, which are published in various newsletters and online platforms. He loves doing extensive research on the subject and solving critical indirect tax problems. His mission is to spread indirect tax knowledge, solve indirect tax problems, and to raise voice against unscriptured practices. We welcoming you, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Aditya sir. Okay. Thanks a lot. We welcome all the participants as well here in this in-depth GST compliance training for articles and CA officers program hosted by Pune branch of Vikasa of ICI jointly with Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhavnagar, Dhule, Ichalkaranji, Jalgaon, Latur, Nanded, Nasik, Pimpri Chinchwad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Solapur branches of Vikasa. Over to you, Ravi sir. Yeah, thank you very much, Mosmi madam. While I have only designed the structure, the entire pain of implementing it has been taken from your all, entire Pune branch team. And I'm really glad the way in which the entire program is being coordinated and carried out within a short span of time. And wonderful to know that a lot of students have enrolled for this program, both on the Zoom call as well as on the YouTube channel. And also thankful to Adil ji for that introduction. So without taking any further time, I would straight away head on to today's session. I'll be speaking in Hindi and English mix because I think everybody would be comfortable with that. And I understand a lot of people also join from North. And although it's not just a Pune branch session, it's a session of national level in my view, because I heard that people have joined from Punjab and other locations across the India for this particular session. So it's important to understand that why this topic is there and why we are doing this session, at this juncture. Compliance under GST, although looks a tedious task or something that's a matter of routine. But do you know that what is the cost of non-compliance under GST? For instance, I'll give you an example. There was a client where there was a big DGGI investigation team of GST has come, and they have started raiding and searching, and big investigation proceedings have taken place. And do you know the reason for that investigation? When we tried understanding what is the root cause that has caused this entire investigation and the pain and harassment which the assessee has to go through, you'll be surprised that the reason was difference between GSTR 1 and GSTR 3B. And let me tell you that if there is a liability that has been disclosed in GSTR 1 and which is short in GSTR 3B due to various reasons, it need not be due to
short payment of tax. It can be due to various reasons, correct? Currently, the provision of the law, the way it is drafted, government can straight away go for recovery proceedings even without issuing a show cause notice. They can straight away go for a provisional attachment of the bank. They can issue the letters to the debtors for recovery. So it's all about the business's reputation that is at stake, and all that drills down to the compliances that we carry on day in, day out. So as a chartered accountant, we also have a office. We place a heavy reliance on article students, our staff, our qualified staff in ensuring these compliances. Although we create various checks and balances, maker-checker controls within our own office, but still, the person who is doing the first level work has to be really diligent. I've seen cases where the assessee's GSTIN was suspended and later on cancelled because of some differences which were there between the balances that were there in GSTR 1 and 3B, and details not matching with the e-way bill portal. Let me tell you, in future, the way the law is going to go forward, if there are these kind of differences, it can be so much so that the GSTR 1 filing itself would be blocked by the government. Today, government has tremendous powers in suspending or cancelling GST registration, blocking electronic credit ledger, blocking e-way bill mechanism, and now this e-invoicing is coming way down to 20 crores. So big number of assessees are now going to come within the ambit of e-invoicing. So that is something we need to ensure, that the e-invoicing system is proper and there is a continuous reconciliation with the normal invoicing. So these are all things which are, although a part of the regular monthly compliances, but the ramifications are really high. So now let's, I'll share my screen for the today's discussion that we are going to do, which is on the topic study of financial statements from GST point of view. We will make it a discussion oriented session. In the course of discussion, I would be asking various questions to you. In case you can answer the questions. Of course, it's not a physical seminar, but then by virtue of this webinar mode, if you keep on answering the questions in the chat box, I'll be feeling that I'm there and you all are listening to me. So very important when we look at GST. I hope my screen is visible, right? There is a chat box. Somebody is saying video is not available. Yes, sir. It's visible. Okay. Great. Fantastic. So when we look at GST, more specifically 9C related aspects, we feel that GST में क्या है? सिर्फ reconciliation करना है, numbers match करने हैं, हो गया 99C. What is GSTR 1? वैसे भी e-invoicing आ गया है. Majority of data is anyway there in the e-invoicing portal. तो बाकी जो है B2C में उतना GSTR 1 में हमको डालना है. Then GSTR 3B we need to file with जो अब 2B में आता है उतना credit लेना है. That's all. Then yearly we need to do the reconciliation and close GSTR 999. So that's all the ambit of GST. In fact, there was an article student in our office who came to me and told that, sir, my friends say कि GST में आगे scope नहीं है. And she's saying, I'm fighting with my friends stating that अरे बहुत काम है GST में. So it all depends upon what is that we are doing in our day-to-day work. That's very important. अगर हम सोचते हैं कि GSTR 99C, GSTR 13B is only number game, जहां पर सिर्फ ये नंबर यहाँ कितना और यहाँ कितना हमको सिर्फ reconcile करना है, then let me tell you, we are not doing justice to the work that we are doing for the client. And you should not be surprised कि अगर कल के दिन client को कुछ notice आ गई or some investigation or some sort of a big issue crop up, then we would be responsible somewhere for that. Correct? So today's discussion, what I want to bring out is that GST is much more than mere reconciliations and number game.
जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाथ में लेते हो ऑडिट कंपनी के, ट्रायल बैलेंस व्हेन यू टेक इट, क्या देखना चाहिए आपको ट्रायल बैलेंस में? व्हाट इज दैट यू मस्ट सी, व्हाट आर थिंग्स यू मस्ट एनालाइज, एंड यू मस्ट हैव अ क्यूरियस माइंडसेट व्हाइल यू डू दैट. Most importantly, there are many students who come and say, sir, audit is very boring job, sir. Audit में क्या होता है? चेक करो, चेक करो, वॉचिंग करो, खत्म हो गई ऑडिट. अगर आप ऑडिट को एज अ वॉचिंग एक्सरसाइज समझोगे, it is very boring. Let me tell you, even I agree it is very boring. But अगर आप ऑडिट ऐसे करोगे, I'm just putting a frame of mind. अगर आप ऑडिट ऐसे करोगे कि मेरे ऑडिट करने से क्लाइंट का कितना फायदा हो सकता है, what is the value addition I can give to the client, just have that thought process in your mind and then you do the audit. Let me tell you, your entire approach towards your work will change. Many people ask me that right from articleship मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आगे तक क्या करना है. जरूरी नहीं है. I have done my articleship in internal audit, but today I am doing GST. What is important is to have two important skills as a student, as a professional. One is a problem solving skill. जब कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, you think how you can solve that problem. And if you have this skill of problem solving, let me tell you, whatever profession you choose, whatever area you choose, you will excel. Because you're not coming with problems, you are coming with solutions. And there are very few people who do that. And the next important thing is, whatever work you do, see what is the value addition that you can do for the client or for the recipient. If you start adding value, you will be respected not just by the client, by your seniors, by your peers, and across the entire society. So two important skills that we need to develop as students, as professionals, which even I am learning, is how to have the knack of solving problems and how to continuously add value. Let me tell you, the way our profession is going, जो direction में हमारा profession जा रहा है, I will not be surprised, काफी सारी compliance वाली चीजें automate हो जाएंगी. Technology is not just affecting chartered accountancy profession, it is impacting all the professions. Therefore, it is very important that the work that we do should be something so deep, something so creative, something so analytical, logical based, that technology cannot replace that. Are you getting it? Which is very hard to replicate. Do things that are hard to replicate. So if you are restricting your work only to reconciliations and number crunching, then certainly technology is going to replace. But if you go beyond that, there is so many things to do in GST. Now let me take you through the slides one by one. This is broadly our coverage today. We'll be looking at, just a minute. Yeah, we'll be looking at systems and controls. Balance sheet में क्या देखना चाहिए? Income and expense statement, what do we see? Notes to accounts में क्या देखना चाहिए? And we'll dive into the details of each one of these aspects, right? Systems and controls. This is a very, very important aspect, that हर चीज की root cause को समझो. Before going into the financial statements, understand from where the numbers are going in the financial statements. So first and fundamental thing जो हमको समझनी चाहिए, flow of entry into the accounting system. आपके हाथ में जो financial statements है, हाँ ये statutory auditor ने audit कर दिया तो फिर तो ये तो एकदम final है, इसमें अभी कुछ आगे बोलने की need ही नहीं है हमको. While that is true, but then it is very important for us to question कि ये accounting system में entry कैसे आई है? What is the flow? I'll tell you what I do personally and what I used to do is that जब कभी कोई client की GST audit के लिए हम जाते थे, और पहली बात एक important thing, you know, if we think that GST work or whatever work we can do based on offline, in the sense sitting in the office, then we are not doing justice. काम अगर सीखना है तो client place पर जाकर काम करना चाहिए हमको. The amount of learning that you will get when you are physically at the client's place will never be matched or replaced when you are sitting at office and doing the work, or sitting from home and doing the work.
So what I do, I go and sit next to the accountant and I ask him, sir, आप journal entry जहां से पास करते हो, वहां पर आप GST के कैसे कैसे आप journal entry पास करते हो, आप मुझे बताइए. I kind of take a complete walkthrough right from passing of journal entry to how that entire flow is happening and the details are going in GSTR1. ये बहुत important है कि इनका client का current compliance whether it is manual or whether it is automated. अगर manual है तो आपके पास एक बहुत बड़ी suggestion which you can give to client is that today to file a GSTR1 the client's accountant is taking 3 days. That can be done in 3 hours if it is automated. Client will appreciate you for that suggestion if you can give that suggestion to the client. But how you will be able to give that suggestion to the client? You need to sit with that accountant. Accountant के साथ बैठकर समझना होगा कि ये पूरा flow कैसे होता है. I'll tell you one of the client where the accountant was taking, there was a big gap in understanding. CFO बोलता है कि मेरे हिसाब से मेरी टीम 5 दिन महीने में ऑलमोस्ट खाली बैठती है, और जब हम अकाउंटेंट से बात करते हैं वो बोलता है कि हम तो डेली ओवरनाइट काम कर रहे हैं. Now there is a big gap in understanding between both these people. Why the gap is there? The gap is because there is so much of task which this accountant, poor accountant, he is doing manually. That is where our role comes. But sir, can we crash time in these things? How we will be able to come to know unless we do a complete walkthrough? तो हमको वो जो जूनियर लेवल अकाउंटेंट है क्लाइंट प्लेस पर, उनके साथ में बैठकर समझना होगा कि आप एंट्री कैसे पास करते हो जीएसटी की, ये कौन सी लेडजर में हिट कर रहा है, यहाँ से ये आपको ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखेगा, और वहां से वो अल्टीमेटली GSTR1 और GSTR3B में कैसे जा रहा है, ये पूरा फ्लो हमको समझना होगा. In one of the client, when we tried understanding the flow, we realized that he does at least 4 times VLOOKUP and 3 times pivot to bring that number to that level. And I just get a goosebumps कि अगर गलती से एक बार भी उसने कुछ एक्सेल में मिस कर दिया, it's a big amount and it always comes with interest, correct? And many organizations, the moment there is interest, they will debit the amount back to the employee. So before we go straight away into the financials या ट्रायल बैलेंस, हमको समझना होगा कि ये ट्रायल बैलेंस में एंट्री कहाँ से आई है. क्या क्लाइंट के पास में कोई डॉक्यूमेंटेड एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? अगर आपने ये पूरा वॉक थ्रू लिया है तो इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दो. Document it entire in a form of a standard operating procedure. It will be a Bible for the client. It will be a Bible for the client. Let me tell you, client will pay you for the standard operating procedure that you are drafting for them. Because for him, if the accountant replaces, still that SOP is important that everybody needs to follow for the GST purpose. बहुत important है कि हम sales register और purchase register जो client हमको देता है, we simply rely on that. We never question the validity or authenticity of the sales register or the purchase register. ये कहाँ से आया है data? So we need to understand that we are working through the technology. We are working around the technology. I'll give you an example. एक client था जिनका हम लोग देख रहे थे कि ये CGST, SGST लग रहा है instead of IGST लग रहा है instead of CGST, SGST on the purchase side. And we started realizing कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा मिस्टेक क्यों हो रही है? Is it because के इनके vendors इतनी गलती कर रहे हैं? जब हम root cause में गए, then we realized कि इनके जो purchase register जो निकलती है client की, उसमें जो GST नंबर होता है, वो GST नंबर जो इनवॉइस पे GST नंबर है वहां से पिक नहीं करता है, इट पिक्स फ्रॉम द वेंडर मास्टर. वैसा लॉजिक दिया गया था परचेज रजिस्टर की मैपिंग के लिए. तो लेट अस से देयर इज अ वेंडर जिसका महाराष्ट्र में भी GST नंबर है और हरियाणा में भी GST नंबर है, हालांकि वो मटेरियल हरियाणा से सप्लाई कर रहा है, करेक्ट? And system must correctly pick the Haryana GST number from the tax invoice, but system is picking the GST number from the vendor master. In vendor master, the GST number recorded is that of Maharashtra, not that of Haryana. So the important part is, it is not correct for on our part to rely on the purchase register or sale register or कोई भी register जो client देता है as it is. We need to map these numbers with the trial balance. We need to question the authenticity of these documents कि ये कहाँ से आया है number, correct? Only then we'll be able to do justice. Sir, automated है पूरा accounting system, then it is best. Let me tell you, पूरा automation है, then also it's a problem. Because अगर एक भी logic या software की coding में जरा भी गलती हो गई, then that mistake is going to replicate continuously. So full automation is also a problem.
reconciliation between accounting system and invoicing system, ये एक बहुत important चीज है. We look at the sales register, but many times it happens that the accounting system is different and the invoicing system is different. For example, dealers in the car manufacturing, they do the invoicing from the dealer management software, but उनकी accounting पूरी tally में होती है. तो जो accounting system और invoicing system की reconciliation, that is something we need to carry out. More importantly, गलतियां होती हैं year end, month end transactions में, where a transaction of particular month is considered in the next month, but it is already there in the invoicing system. Correct? Backdated entries, very very important. काफी clients में हम देखते हैं, even very organized sectors, forget about small companies, बड़ी companies में भी backdated entries pass करते हैं. हम जाकर बोलेंगे नहीं सर, एक आपको सिस्टम लगाना चाहिए कि 10 तारीख हो गया एंड उसके बाद में backdated entries पास ही नहीं करनी है, this that blah 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 all that. I'll give you one example. 2000 crores company, listed company, बहुत बड़ा नाम है, it's a very reputed name. They have lost the input tax credit of 50 lakh rupees because of backdated entries. और वो टाइम पर रीजन इसीलिए हुआ था कि जनरली वो बोले हम लोग backdated entries करते नहीं है, लेकिन वो सितंबर के टाइम पर जब ऑडिट चल रहा था तो हमको वो एक छोटा सा विंडो 2 दिन के लिए हमने खोला था backdated entries पास करने का, और वो विंडो में लोगों ने backdated entries पास की. वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब 2 दिन का विंडो खोला था, GST और 3B बस उसके एक दिन पहले फाइल हो गई थी और एंट्रीज उसके बाद में पास हुई. फॉर द पास्ट 50 lakhs rupees of input tax credit was gone, flushed into the system, और किसी को पता ही नहीं है. मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं दैट इन अ कॉर्पोरेट या कोई भी बड़ी कंपनी में एक 5000 रुपए का अगर एक्सपेंडिचर भी पास होना होता है, इट गोज थ्रू layers of approvals. But I've seen cases where a junior accountant at the client's place has reversed lakhs of input tax credit in GSTR 3B, or there is no approval mechanism in the company. Lakhs of input tax credit is reversed from the return, and there is nobody asking a question. Now I'm asking a question to you all. Is input tax credit a cash? I'm asking. Please answer me whether input tax credit is cash or not. It's an asset. It's an asset, correct? It's a cash that you have given to the supplier, and invoice is like a check. So please treat input tax credit like a cash, and then you will appreciate the value of input tax credit. Coming to balance sheet items. Now, I have only given you a flavor of what you need to check in systems and controls. There can be so many things, correct? Depending upon client, industry, उनके accounting system कैसे automated है, manual है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको knowledge है GST की नहीं है, कहाँ से सीखते हैं, do they have a system of updating on the GST law? All these things are important aspects when we look at systems and controls. Coming to balance sheet. Now, when I say balance sheet, let's look at the equity part of it. तो equity में हमको क्या देखना चाहिए balance sheet में? Most important thing, equity से आपको पता चलेगा who are the related party transactions, who are the related parties. And we all know that the tax treatment for related parties is different from unrelated parties under the GST law. And the definition of the term related party is very, very wide under GST, correct? Even a common director makes the two entities related parties. Hence, हमको equity से पता चलेगा कि who all are the entities who have direct or indirect control in the organization. And through that, we can come to know who are the related parties. एक बार related parties पता चल गया, then we know कि Schedule 1 के हिसाब से, even if there is no consideration, it is deemed to be supply and we need to pay GST on those transactions. Valuation in case of related parties has to be open market value. It cannot be absurd valuation. I'll give you one beautiful example on valuation जो हम लोग करते हैं हमारी ऑफिस में when we check. हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का आइटम कोड अगर निकाल लिया एक बार कोई एसएससी का,
और आइटम कोड निकाल कर वी लुक एट व्हाट इज द रेट पर पीस वो आइटम का कितना है. लेट अस से इट इज 10 रुपीज. ठीक है ना. तो वेदर वो जो 10 रुपीज में दिया है, वेदर इट इज कंसिस्टेंटली 10 रुपीज टू ऑल द अदर कस्टमर्स ऑल्सो. देन सडनली वी सॉ देर आर सम गैप्स कि वही चीज 10 रुपए में बेची है और कुछ टाइम बाद वही चीज जो है 4 रुपए में या 2 रुपए में गई है. दैट इज वेयर अ डाउट कम्स. Why? Was it because of? But we need to ask these questions to the client. Why there is a difference? So while we were doing it, we saw that there are so many items that were removed at a 1 rupee value. Then we questioned, what is this 1 rupee related transactions? We came to know that all these were FOC supplies to the related parties without any tax. अभी ये काफी चीजें हम कैसे करते हैं, हम जाके क्लाइंट को पूछते हैं, सर आपकी रिलेटेड पार्टीज कुछ है? हाँ वो 2-3 है. सर आप कुछ करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं हम कुछ नहीं करते. हो गई ऑडिट. कैसे किया? क्लाइंट को पूछा कि हमने नहीं किया, क्लाइंट ने बोला नहीं किया, हो गई ऑडिट. See, it is important that we trust client. While we trust client, we must always verify. As an auditor, I cannot do audit only based on oral communication. While I trust what the client is saying, it is important that I verify that. चलो क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं है, एक बार देख लेते नहीं है क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उनकी वैल्यूएशन बराबर है क्या. स्पेशली 1 रुपी, 10 रुपीज और ये 100 रुपीज की जो सप्लाईज होती है, आई विल टेल यू देयर विल बी प्रॉब्लम्स होनी ही है वहां पर. बट वेदर वी आर चेकिंग दिस, if we are not checking this, let me tell you, department is going to check only these things. And the client is going to raise a question कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया. In the equity mix, we also need to understand that sale of shares, sale of equity, sale of stake, this is a transaction purely in money. This is not liable to GST. But mergers and acquisitions में we need to be little careful. अभी mergers acquisitions अलग अलग टाइप के होते हैं. There can be a simple transaction of sale of assets. There can be a transaction of sale of assets with liabilities. There can be a transaction of business transfer agreement बना दिया, या फिर सीधा सीधा पूरा slump sale किया है, या फिर completely acquire कर लिया, या merge कर दिया. We cannot conclude कि all mergers or acquisition transactions जहां पर भी होते हैं, there is no GST implication. We need to understand whether it is a sale of assets along with complete liabilities or it is simply sale of assets related transaction. If it is simply sale of assets related transaction, then it will be liable to GST. If it is a slump sale, it is transfer of going concern, complete एक BTA बनाकर पूरा entity, all assets liabilities बेच दिया, then it is not liable to GST. But उस केस में हमको देखना चाहिए क्या input tax credit transfer किया. I'll give you example of just yesterday. Yesterday we were having a discussion with MD of one of the large manufacturing companies. You will be surprised. It's a 500 crore company. बट 12.5 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक पुरानी कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया था. ITC 02 इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू नीड टू ट्रांसफर द क्रेडिट. हालांकि क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, बट जो रिसिपिएंट होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है सिस्टम में फॉर द क्रेडिट टू इवेंचुअली गो एंड सिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर. द रिसिपिएंट डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर 3 years. And then finally we realized that in the course of merger and acquisition, the 12.5 lakhs of input tax credit was flushed. Finally, we gave a suggestion, please accept this so that this credit can get transferred. But these are the important things that we need to look in case of mergers, acquisitions, and when there is a change in equity. And most importantly, post-transaction effects. Invoice previous company में raise हुआ था, तो credit note क्या दूसरी company में दे सकते हैं? क्या कल के दिन डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने जो क्रेडिट नोट दिया उसका नंबर तो जीएसटी नंबर दूसरा है और इनवॉइस जहां से रेज किया उसका जीएसटी नंबर दूसरा है, आई विल नॉट गिव यू द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट नोट. जो प्रीवियस कंपनी, इफ इट इज मर्ज्ड, देन वेदर वी नीड टू फाइल द फाइनल रिटर्न एंड क्लोज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. These are all important things that you need to look at when you see change in equity by way of mergers, acquisitions, sale of going concern, business transfer agreement. How many times we have gone and actually read the NCLT order? How many times we have actually read the business transfer agreement?
I'll tell you in one case, क्लाइंट ने बोला ये कंपनी हमने वो दूसरी कंपनी को पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एंड इस पे तो जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगा. When we actually looked at the document, it was not a business transfer. It was a simple transaction of sale of assets. There was no business transfer agreement. So we need to ask for documents in all these cases. Ravi sir, transaction in money also includes sale of shares. Yes, And yes. sale of share 17.3 will be applicable. That is very, very important point which Rajesh sir is bringing out. Okay, while we are doing the sale of shares, it is neither a supply of goods nor a supply of service. तो उस पे GST नहीं लगता है. But do we stop there? We need to understand जहाँ GST नहीं लगता है, there also it's a problem because you need to reverse the proportionate input tax credit. Correct? And वहां पर एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि सर इसकी वैल्यूएशन कैसे करें. मैंने 50 करोड़ के शेयर बेच दिए, तो मेरा अगर टर्नओवर में 50 करोड़ लूंगा तो 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट आई नीड टू रिवर्स. माय टोटल टर्नओवर इज 100 करोड़. वहां पर बताया गया है वैल्यूएशन मस्ट बी ओनली 1%, नॉट 50 करोड़. इट कैन ओनली बी 50 lakhs. It's a 1% of the entire value that the entire transaction that has been carried out. This is given in the rules. I'll be coming to these aspects in more detail when I go to the input tax credit side, Rajesh bhai. I hope this point only you wanted to bring out, right? Right, sir. Yes. Now, when it comes to current liabilities, एक और चीज जो मैंने notice की है in the entire GST review, that we focus only on income and expenditure. Trial balance लिया, incomes देखा, expenditure देखा, हो गया. बैलेंस शीट में क्या रहेगा जीएसटी रिलेटेड? Kritika is asking me to repeat. See, Kritika, what I'm trying to say is that let us say a company is sold the shares worth 50 crores. ठीक है ना? तो 50 crores उनकी exempt supply हो गई, for which they need to reverse the input tax credit. Correct? And let's say they have a 50 crore of taxable supplies. So if you really apply the ratio based on turnover, you need to reverse 50% input tax credit because 50% of the sales is non-taxable under GST. But under the rules, it has been categorically mentioned for the purpose of reversal, the value needs to be only 1% of the value and entire transaction value that's been carried out. So this 50 crores will come down to 50 lakhs, which will only 1%. I'm not getting exactly, it's an explanation to rule, I think rule 42 में या 43 में इसका explanation दिया गया. ठीक है, you can have a look. सर मैंने ये पॉइंट इसलिए रेज किया कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, P&L आइटम देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ट्रांजैक्शन इन मनी. Many companies has not reversed input tax credit even 1% of the transaction value. करेक्ट. बहुत लोगों ने नहीं रिवर्स किया इनपुट टैक्स क्रेडिट. एंड लेट मी टेल यू, यही चीज डिपार्टमेंट आके आइडेंटिफाई करने वाले हैं ऑडिट में. दिस इज अ कॉमन एरर. मेनी बिजनेसेस हैव नॉट रिवर्स. आपने जाकर उनकी इनकम में देखा, देयर इज अ सेल ऑफ शेयर्स, देयर आर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बट वेदर देयर इज अ कमेंसरेट रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आंसर इज नो. नाउ कमिंग टू करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में अनसिक्योर्ड लोन्स है, तो आपका क्वेश्चन है अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या रहेगा जीएसटी इम्प्लीकेशन. आई विल टेल यू, even in unsecured loans, especially in builder industry, you will find that initially businesses will take unsecured loans, which is actually an advance against flat, and later whenever the completion certificate has come, the loan will be reversed and the advance will be adjusted against the flat. There is a departmental circular under service tax that this will be liable to service tax, and the same circular will apply even in GST regime. तो हमको देखना चाहिए whether the unsecured loans, whether these are really in the nature of loans or whether they are only an stopgap arrangement to not levy tax on advances under GST. We all know that in advances GST is liable under service sector. Correct? Very, very important. Go and ask the loan related documents to the clients. Agreement पूछो एक बार.
Another very important thing, mobilization advance. बहुत ही common practice होती है in the infra industry, where they get mobilization advance. Very important question is that just because नाम में advance है, whether it is liable to GST. Let me tell you, mobilization advance is received against a bank guarantee और उसके against interest मिलता है, उसके against interest देना होता है assessee को. And there are two judgments of Bombay Tribunal where it is mentioned that mobilization advance is a financial transaction. And today, what I see or what I notice, entire infrastructure industry is paying GST on mobilization advance. Although there are tribunal judgments which say that it is not liable to GST. अगर आप ये एक advice अपनी कोई infrastructure client को दे दो, that will be such a big value addition. You just imagine it is a saving of 18% on 5% of the contract value. Generally, mobilization advance 5 से 10% of the contract value की मिलती है. 200 से 300 करोड़ की contract values होती है. तो 20 करोड़ के ऊपर आपने 18% client का अगर बचा लिया, such a big value addition for the client. Security deposits, which will again be reflecting in the current liabilities. As long as it's security deposit, there is no implication. But अगर security deposit adjust कर दिया against a consideration, it will be liable to tax. आपको कैसे पता चलेगा कि security deposit consideration के against adjust किया? जब तक आप जाकर balance sheet में वो security deposit की ledger आप देखोगे नहीं, you will never be able to track these things. Creditors ledger. Sir, creditors में क्या देखना चाहिए GST related? I'll tell you 2-3 important things जो आपको creditors में देखनी चाहिए. एक long due creditors. अगर कोई creditors long due है, तो हम सभी को पता है कि more than 180 days, input tax credit needs to be reversed. You can again reclaim once you make the payment, but एक बार तो reverse करना ही पड़ता है with interest. So we need to ask the creditors aging report to the client. And what are we going to verify? Who are the creditors where the payment is due for more than 6 months? Are we checking the creditors aging report? I'll tell you another example. काफी लोग बोलते हैं कि सर ये हमने 2B में क्रेडिट नहीं दिख रहा है, आपने फिर भी आपने क्रेडिट लिया नहीं, हमने वो हमारे क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, एंट्री मार दी, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया. Then in one of our client we went and actually checked कि आप बोल रहे हो कि आपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, आप बताओ हमको अकाउंटिंग. तो while originally there was a debit, later there was supposed to be an immediate purchase from the same vendor and the payment was released. So whether these 2A related debits जो हम बोल रहे हैं कि हम अपने vendor को debit किया, क्या ये really debit हुआ? Are we doing the reconciliation between what is that input tax credit that you have not claimed because it is not reflecting in 2B, and what is the debit that you have made to the creditors? Let me tell you, you are surely going to find value addition for the client. And it will be an eye opener for the client, because I've seen organizations जहां पर purchase department और accounts payable department और taxation department में कोई coordination ही नहीं होता है. Purchase वाला आके सीधा खड़ा हो जाएगा कि आप उसका अभी payment release करो because I want material from him, otherwise the production is going to stop. You don't have a choice but to make the payment. Correct? But these are the things that you need to identify and bring it before the top management. Creditor में अगर debit balance है, it means हमने creditor को advance दिया है, correct? तो जो creditor को advance दिया है, उसका input tax credit तो आप ले नहीं सकते हो. So whether the advance is paid with GST or without GST, if it is paid with GST, then you need to tell management that the working capital is blocked. आपने 18% वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर दिया है, जिसका क्रेडिट जिस दिन वो क्रेडिटर आपको इनवॉइस रेस करेगा उस दिन आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे. तब तक के लिए ये आपका क्रेडिट ब्लॉक हो गया है. एंड इफ यू हैव पेड एडवांसेस टू अ क्रेडिटर व्हिच इज लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, देन इमीडिएटली देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ टैक्स. अगर आप सिर्फ एक्सपेंडिचर देखोगे रिवर्स चार्ज के लिए, then you will never be able to identify those transactions under reverse charge which are taxable on immediately making the advance payment to the supplier. ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर लेडजर से ही पता चलेगा. वेंडर नॉन कंप्लायंसेस आपको क्रेडिटर लेडजर से ही पता चलेगा. कितनी बार हम क्लाइंट को उनके नॉन कंप्लायंट वेंडर्स की लिस्ट निकालकर भेजकर बता रहे हैं कि ये आपके नॉन कंप्लायंट वेंडर्स और आपको फॉलोअप मैकेनिज्म इसका स्टार्ट करना चाहिए. हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग दिस टू द क्लाइंट्स?
Let me tell you, in all cases where we have done for our clients, even the top most person in the company is interested to see who are those non-compliant vendors. Today in GST regime, nobody wants to do business with non-compliance. Most importantly, when it comes to non-compliant vendors, this information today is just not available to the top management. So that is something we need to identify and bring before the management. And we all know कि महाराष्ट्र में एक circular आया है very recently which mentioned that अगर आपका कोई vendor non-compliant आपको लगता है लेकिन actually उसने tax pay कर दिया, maybe declaring as B2C or whatever, take the declaration from the vendor and we will allow the input tax credit. This is what Maharashtra internal circular says. So it's important that we immediately tell our clients कि चलो ये vendors है, अपने को पिछले 4 साल के बाद इसका अपने को ये declaration लेना है. ये declaration आज लेना is always better than taking this declaration after 3 years. But these suggestions must go to client today, not after 3 years when his assessment is going to be taken up. And that time client is only going to say, सर जब ये सर्कुलर 3 साल पहले आ गया तो आपने हमको क्यों नहीं बताई ये चीज कि हमको उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिक्लेरेशन लेना है या फिर उनके लेटर एट पे डिक्लेरेशन लेना है. We have sent communication to our clients that immediately let's do the complete reconciliation right from 2017-18, identify the non-compliant vendors and put the team on task to take the declarations. Customer advances also will be shown on the current liabilities. We all know that customer advances are liable to tax immediately in case of service sector. Employee debtors, creditors, adjustments accounts होते हैं. काफी बार employee को पैसा देते हैं and then वो return देता है. This is all reimbursements. तो reimbursements जैसे राजेश भाई ने बताया, reimbursements ऐसी चीज है जो आपको mostly balance sheet में ही पता चलेगी. आपको कितनी बार मैंने नोटिस किए हैं कि एक किसी को पैसा दिया, पैसा रिटर्न आया, उसको इनकम भी नहीं दिखाया, एक्सपेंडिचर भी नहीं दिखाया, बैलेंस शीट में नॉक ऑफ कर दिया. आपको पता ही नहीं चलेगा तब तक आप बैलेंस शीट नहीं देखोगे. एंड वी ऑल नो दैट रीइंबर्समेंट्स आर आल्सो लायबल टू जीएसटी एक्सेप्ट इफ द रीइंबर्समेंट्स आर इन द नेचर ऑफ प्योर एजेंट. और प्योर एजेंट में सेटिस्फाई करने के लिए 7 कंडीशन से जो सेटिस्फाई करना होता है, अगर वो 7 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, देन इट इज नॉट in the nature of pure agent. There was one client in a logistics sector where I think in 2017-18 we got them paid a big amount because of this. And when we asked why it is not recorded as income, they told it to reimbursement है सर, वहां से आता है, हम इनको देते हैं, knock off कर देते हैं ये पूरे reimbursements. But these things are important that we check in the current liabilities. And most importantly, TDS. If TDS is under section 195, then we know that it's a foreign payment और उस पे GST में reverse charge की liability आ जाएगी. So depending upon the TDS under which section it is deducted, you need to understand what is the GST implication on that transaction. Correct? So these are the various things that you need to check as far as current liabilities is concerned. Now current liabilities में एक और बहुत important ledger है which we miss out, and that is duties and taxes. Did we do a simple exercise of matching CGST ledger with the SGST ledger? See, CGST and SGST both go hand in hand, correct? So what we need to do, CGST जो client का है, वो SGST से match कर रहा है क्या? If it is not matching, what is the reason? What is the root cause? एक और बहुत fundamental issue जो हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर, जो ऑनलाइन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर है, जब हम लॉगिन करते हैं उसमें दिखता है ITC बैलेंस इज 2,20,02,222 रुपीस. आकर इनकी बुक्स में अगर देखा, बुक्स में ITC बैलेंस दिखा रहा है 1,83,02,221 रुपीस. अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 40 लाख का? Did we look at this? In my view, if there is one exercise that we must surely do for our clients, is map the balances of input tax credit as per electronic credit ledger with the balances as shown in the books of accounts. You will find 2-3 major issues in that. या तो कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी है जो उन्होंने लेना मिस कर दिया बुक्स में, या फिर कुछ ऐसी क्रेडिट्स है जो उन्होंने लिया लेकिन उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की. And there can be many other reasons. But then tomorrow
department is going to ask all these questions, and they are going to ask to reverse the input tax credit. So we need to map the electronic credit ledgers with the portal. In fact, month on month, जो portal पे balance दिख रहा है, वही आपकी TB में दिखना चाहिए. Not a rupee more, not a rupee less. In fact, one client was so stringent that वो GST और 3B भी फाइल नहीं करते हैं जब तक ये मैच नहीं होता है. They don't file. Reconciliation of ITC balances, which I already covered. Utilization entries. Many clients we have seen utilization entries pass ही नहीं करते हैं. Credit आया, जितना टैक्स पे किया, लेकिन दिस ऑफसेटिंग एंट्रीज आर नॉट पास. हेंस आपकी बुक्स में जो आपने टैक्स पे किया विद द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेडजर इज नेवर मैचिंग. व्हाट इज द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पासिंग द एंट्रीज रिलेटिंग टू जीएसटी? हमको देखना चाहिए वो कि आपने जीएसटी के कितनी लेडजर्स क्रिएट किए, क्या लेडजर्स क्रिएट किए, उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है या इज इट सिंप्लीफाइड? इज इट रियली हेल्पिंग यू इन फाइलिंग 999C स्मूथली? इज इट रियली हेल्पिंग you to do all the reconciliation? Why have you unnecessarily created this 100 ledgers of GST? Can you trim it down? तो ये सभी चीजें अपने को तभी समझेंगे जब हम वो अकाउंटेंट के साथ में बैठकर समझेंगे कि आप एंट्री कैसे पास कर रहे हो और वो कौन सी लेडजर को हिट कर रहा है. These are the value addition tips that we need to give to our clients. Reverse charge accounting, fundamental issue. I have seen clients जहां पर रिवर्स चार्ज की एंट्री लेवल पर जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करते हैं. मंथ एंड में वो निकालते हैं लेडजर, हाँ ये जीटीए, स्पॉन्सरशिप, डायरेक्टर्स, इन रेंट कैब, इस पे रिवर्स चार्ज लगता है, इतनी कैलकुलेशन हुई, इतना रिवर्स चार्ज भर दिया, और उसकी एंट्री बुक्स में नहीं है. एंड एंट्री इज देयर, द ब्रेकअप ऑफ दिस वर्किंग्स आर देयर इन सेपरेट एक्सेल शीट. And most of the times that Excel sheet never matches with the books. Never matches because वो draft था, draft के बाद final किया, final वहाँ update है और books में update नहीं है. So एक और big headache is to reconcile these two documents. What is the system of passing? Why don't you create the reverse charge liability at the entry level right away? Why you want separate Excel sheet? Whether you are tagging the advance ledgers and whether you are immediately creating the liability on advances in the books of accounts. So these are all important things, and very important aspect that we also need to look at. Okay, अगर client का input tax credit accumulate हो रहा है, then we need to identify the way out. For example, let's say an assessee is having 6 GST registrations. महाराष्ट्र में वो continuously cash में GST भर रहे हैं और हरियाणा में उनका 2 करोड़ का accumulation है GST का. Is it not foolishness that your own money is lying in electronic credit ledger of some other GST number, and in another GST number you are continuously burning the money by paying in cash? Should we look at certain shifting of certain transactions through Haryana to the customers? Can we shift the purchase orders? Can we shift the transactions? Is there a deemed supply between Haryana to Maharashtra or vice versa? So these are all very important. In fact, in the recent budget, they have also brought के cash ledger balance तो आप immediately transfer कर सकते हो. So there is a cash ledger lying in Haryana and you are paying in Maharashtra through another cash. You can transfer that cash ledger directly. So these all things you will come to know only once you review the duties and taxes ledger, and these are the few ratios that you need to perform. Ratio analysis is a forgotten art, if I would say. आजकल तो हम कोई करते ही नहीं है, but I'll tell you, ratio analysis आपको काफी important trends पता चलते हैं. What is my total today? Department is how department is issuing the show cause notice, or how department is doing the investigation. I'll tell you at least 10 to 15 clients, what we have seen, the entire investigation by department has conducted. The reason is, आप GST cash में नहीं भर रहे हो, आप सिर्फ input tax credit से GST भर रहे हो. इसीलिए we want to investigate. This is the reality. So this is on the current liabilities and duties and taxes ledger. Coming to fixed assets related transaction. ITC we cannot transfer from Haryana to Maharashtra. This particular mechanism is not brought in GST law till now. Fixed assets.
when we look at fixed assets from the GST point of view, balance sheet में हम देखते हैं fixed assets. तो सबसे एक और important चीज हमको करनी चाहिए. We need to do a complete mapping with the fixed assets register. फिक्स्ड एसेट रजिस्टर खोलकर हमको देखना चाहिए कि भाई कितना एसेट्स है जो एडिशन हुआ है इन द फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट इज द डिलीशन, व्हाट इज द डिस्पोजल एंड व्हाट इज द डिप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स. On the addition, whether the client has taken input tax credit properly. All the additions you cannot take input tax credit because construction related building में जो आप additions करते हो, that is blocked under GST. On the deletions of fixed assets, whether you have paid GST. Now, यहाँ पर एक बहुत fundamental problem which happens is that sale of capital goods, people pay tax at the transaction value, but actually, as per the law, you need to pay at the transaction value or depreciated value, whichever is higher. Let me tell you, I have seen so many clients where they have missed out this. And they have paid GST only on transaction value, not on the depreciated value. This is another fundamental issue that we will come to know only once we look at the fixed assets register. Whether all the motor vehicles जो आपने purchase किए हैं उसकी ITC नहीं मिलेगी. There was a case where the client has purchased this camper, I think Scorpio camper or Mahindra camper. तो कैंपर गाड़ी में क्या होता है कि सामने there is a passenger transport and पीछे there is a big open space where you can keep the goods. The input tax credit restriction is only there for passenger transport related vehicles, not the goods transport related vehicles. And when we went and checked the RC registration of that particular vehicle, it was registered as a goods transport fleet, not as a passenger transport fleet. And we asked the client to take the entire input tax credit. Demo vehicles in the case of automobile dealer industry, there is an advance ruling in favor of the assessee that the input tax credit is eligible. So we need to look into all these important aspects. Fixed assets that are removed to other locations of the same company. It's a transfer of stock and stock transfer is liable to GST. ये चीज आप जब तक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देखोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा. And many times it will also not be visible in fixed assets register because it's a pan India level transaction. Fixed assets register जो बनता है FAR वो pan India level पर बनता है. Correct? So eventually you need to go and see the delivery challans. How many times we have done this exercise? Okay, another very important aspect which I would like to bring out. We think that GST is applicable only on sale transactions, जहाँ पर sale हो रहा है कोई asset या कुछ. But GST is also applicable on stock transfers. How many times we have asked the inventory register to the client and tried analyzing the stock transfers from the inventory registers? कितनी बार ऐसा हुआ कि हम जाकर क्लाइंट प्लेस पर वो जो गेट पास पर जो डिलीवरी चलान की फाइल होती है वो डिलीवरी चलान की फाइल निकाल कर देखा कि भाई ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पर मटेरियल बाहर जा रहा है, not under the cover of invoice but under the cover of delivery challan, and you will find issues over there because there will be material that is going for samples, testing, trials, warranty replacements, returnable goods, and all these stock transfers. If it is going under delivery challan, not under the cover of invoice, it means the client is not paying GST on these transactions. Correct? And most importantly, if you have claimed depreciation on the GST element, you cannot take input tax credit. So these are all other things that you need to verify as far as fixed assets is concerned. Plant and machinery, furniture, fixtures, electrical, office equipments, ये सभी का तो input tax credit मिल जाता है, there is no problem. But एक सबसे बड़ा important element fixed assets when we verify is the construction related expenses जो होते हैं. We all know that the construction related expenses, the input tax credit is disallowed. It is not allowed by the department under section 17, subsection 5, subclause C and subclause D. But then, whether this could be planned, whether this could be structured such that you can maximize the input tax credit,
What is restricted is construction of input tax, construction of goods or services. What about installation? What about excavation? What about repairs? What about maintenance? What about erection, completion, fittings, commissioning? Today, businesses don't bifurcate these expenses. सभी चीज को construction में डाल दिया और पूरा input tax credit reverse कर दिया. A small deeper dive into this aspect itself is a worth doing, because you will be able to save huge amount of input tax credit for the client. See, GST mein, whatever suggestion that you are going to give client, the value addition is straight away 18% of that suggestion. तो अगर आपने कोई suggestion दी जहां पर 1 करोड़ involved है, तो value addition सीधा 18 लाख हो गया. So stakes are really high. So whether this expenditure requires to be capitalized, or whether this expenditure requires to be shown as repairs or expensed off in the books of accounts, as per the accounting principle, what is right? We need to dive deeper. And if it is possible to expense off, then better expense it off and take input tax credit. Why do you want to reverse input tax credits? Big cost that you are taking. What is restricted is the input tax credit in respect of immovable property. But how do you define immovable property? किस चीज को आप immovable property बोलोगे? There are multiple Supreme Court judgments on what is the meaning of the term immovable property. I'll give you an example. We all know that buildings related input tax credit is not eligible because building is an immovable property. Correct? But then buildings as an immovable property is those buildings which are made out of cement, steel, concrete, civil structures. But today, when we go to various factories, especially in Pune, when I go to the areas of Chakan, Pimpri, and other industrial areas, today the entire structure is done with only small portion related to concrete. Maybe some 6 feet, 10 feet will be the concrete. On top of it, there are all big sheds, which are not concrete sheds, totally fixed by nuts and bolts. Can be easily removed and dismantled without causing any damage to the structural to the structure. Whether it is an immovable property. So these things are something that we need to really dive into it. And GST law is such, you cannot get answers only from GST law. In fact, any tax law, you need to dive into the aspects of Transfer of Immovable Property Act to understand the meaning of the term immovable property. What is the object of annexation? What is the mode of annexation? These things will give you the answer. Input services and capital goods. If you classify it differently, then your refund gets impacted. We all know that in case of associates who are doing exports, refund is not eligible on capital goods, correct? I've seen cases where associate has purchased license, which is an input service, but they have categorized this as a capital goods and they have not claimed refunds on that. So even if you capitalize input service, it is not capital goods. It still remains to be an input service. Capital goods are only those items which are goods. Service cannot be a capital goods. Inventories, I've already covered. जैसे मैंने बताया कि GST law coverage is not just on sales, it is beyond sales. So we need to look at inventory register. We need to look at job work register. We need to look what all is a material that is removed as samples, trials, testing, and what is the GST implication on all of that materials. Correct? एक और जो बहुत important चीज होती है is on the trade receivables, that is debtors ledger. Sir, what is that? We need to see in the debtors ledger as far as GST is concerned. First and fundamental, we all know that
अगर कोई किसी कस्टमर से एडवांस आया है तो उस पर जीएसटी लगता है, और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ डेटार्स लेडजर से ही पता चलेगी. Another very important thing that you will only come to know through debtors ledger is delay in billing. I'll give you an example. There was a client jinka monthly warehousing related rental billing hota hai. You know, every month they do a bill of warehousing rental. So when we were looking at the debtors ledger, we saw April में bill raise हुआ, May में bill raise हुआ, June में bill raise हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का बिल सीधा उसने अक्टूबर में रेस किया. And when we asked a question for that, they told that, you know, that is because of whatever COVID, ye wo, you know, various reasons that he has given to us. But the important thing is, for this 4 months, there is a delay in invoicing, which will attract interest. Even delay in raising an invoice attracts interest. Correct? As per section 12 and section 13 of time of supply rule, time of supply provisions. But how we will come to know unless we see the billing pattern? आपको debtors aging report देखनी चाहिए. If there are any debtors which are long aging, जिसपे पैसा नहीं मिल रहा है, at least every September तो ये activity करनी चाहिए कि ऐसा कोई debtors है जिससे you don't expect कि ये पैसा आएगा. Better to raise a credit note and reverse. Why to take the cost of GST? 100 रुपया नहीं आ रहा है, 18 रुपया तो बचा लो. Understand why that money is not coming. Is it because of a deficiency in supply from our side? If that is the case, raise a credit note and save at least 18 rupees for the client. Tax implication on customers due to GST non-compliances. There was a client where the customer was not paying the GST to them. It was a long pending debtors, and when we analyze कि ये debtors इतना long pending क्यों है, तो पता चला कि customer GST amount दिया नहीं है अभी तक. And when we tried understanding कि भाई customers ने क्यों नहीं दिया GST amount, उसका reason ये था कि इन्होंने गलती से B2C में दिखा दिया था instead of B2B, and customer never got the credit in his GST at 2A, and they blocked the entire payments to this client. Then we asked them to rectify this particular thing, and after a certain time, ये rectification के time limit पे चली गई. Then the only option was to go and file a writ petition before the High Court and get the order in favor. And काफी लोगों ने file किया है for rectification. There are so many writ petitions that are filed in the High Courts. But the point is that unless we review the debtors ledger, ये सब चीजें हमको पता ही नहीं चलेगी कि ये क्यों, whether there is any debtors lying because of our GST non-compliance to our customers. जैसे हमने हमारे वेंडर्स का पैसा होल्ड किया है जो हमारे क्रेडिटर्स में दिखेगा, तो हमारे डेटर्स में वो भी दिखेगा जो हमारे कस्टमर्स ने हमारा पैसा होल्ड किया है. करेक्ट? तो वो चीज हमको हाईलाइट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, निकालनी है और मैनेजमेंट को बताने की इतना आपका जीएसटी अमाउंट आपके कस्टमर्स ने होल्ड करके रखा है जो आपके डेटर्स में दिख रहा है बिकॉज ऑफ यूर जीएसटी नॉन कंप्लायंस. Nobody wants the money to be stuck with the customers. Sir, can we take declaration in B2C case? Yes, sir. महाराष्ट्र का तो भी सर्कुलर भी आ गया ना राजेश सर. Yeah, that's why. डिक्लेरेशन लेना चाहिए. इनफैक्ट मुझे तो पूछते हैं कि सर हम सीजीएसटी में रजिस्टर्ड है, सीजीएसटी में कैसे ले? सर्कुलर तो एसजीएसटी ने निकाला. मैंने बोला अभी एसजीएसटी ने निकाला तो आगे सीजीएसटी भी निकालेगा. आप सर्कुलर ले लो, आप डिक्लेरेशन ले लो. दिस सर्कुलर विल हैव अ परसुएसिव वैल्यू. This circular is going to have a persuasive value even for the CGST transactions. Correct? In fact, you will be surprised. ये महाराष्ट्र सर्कुलर देखकर even our other officers, हमारी जो दूसरी ऑफिसेस है, वो लोग भी ये सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं and they are asking their clients to take declarations because we all know कि अगर एक किसी स्टेट ने निकाला तो it will come by other states as well. बट ये डिक्लेरेशन लेने वाली जो बात है ये हमको हमारे क्लाइंट्स को आज बताना होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र वैट मैटर्स में जहां पर 6-7 साल बाद असेसमेंट होता है और जब हम पिछले जाकर अपने वेंडर से पूछते हैं, हाफ ऑफ द वेंडर्स आर नॉट देयर, आइडेंटिफाइबल ही नहीं है वेंडर्स. बट आज वो वेंडर्स अवेलेबल है. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस डिक्लेरेशन लेने वाली जो प्रैक्टिस है ईयर ऑन ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए. And this is how we can add value to the client's business. Any questions till now? I think I thought I'll do Q&A type discussion
but I'm not asking much questions. Any questions till now? Okay, there is a question coming. In case of bad debt, if we reverse GST of bad debt and then after if we record bad debt, we need to pay GST again by debit note. Yes, obviously yes. पहली बात तो bad debts के लिए आप GST रिवर्स नहीं कर सकते हो. As per the law, GST आप रिवर्स तब कर सकते हो जहां पर आपकी कोई सप्लाई में डेफिशिएंसी हुई और इसलिए आपने कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं दिया. उस केस में आप क्रेडिट नोट देकर रिवर्स कर सकते हो. लेकिन आप बाद में कस्टमर ने दिया है तो 100% आपको वो GST पे करना पड़ेगा. Okay, so we'll move further. Coming to investments, balance sheet में हमको एक और item दिखता है, which is investments. By looking at investments, you will come to know again who are all the group companies. Group companies transactions, we all know it's a deemed supply. Again, tax implication under Schedule 1. Valuation impact, related party transactions में. And sale of investments में जो राजेश भाई ने बोला था, same issue, sale of shares and all these things. Okay, there are some questions coming. Okay, sir, can you please provide the details of circular state by Maharashtra state circular? I will do that. Before tomorrow's sessions, I will, or you can just send me email so that I can reply to you. Rectification में कितना time जाता है sir? अरे, it's online. Everything is online. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको department के पास जाके rectification करवाना है. It's all online nowadays. So if you sell goods and no payment received since 2 years, then what can be done? If no payment received since 2 years, then the bus is missed. In a way, the bus is missed. Because जो credit note देने की time limit है law में, वो next financial year के September तक ही है. तो इसीलिए every September जब हम client का GST review करते हैं पिछले साल का, तो हमको देखना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से डेटार्स है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं आएगा, तो वो चीज सितंबर तक ही करनी चाहिए. After 2 years, time is gone. Then other receivables also we need to look, because sometimes amounts will be written in other receivables rather in the debtors ledger. No ITC available. Prepaid expenses में देखना चाहिए हमको कि भाई ITC मिलेगा क्या, whether goods या services receive हुई क्या. अगर goods services receive नहीं हुई और सिर्फ पेमेंट हुआ तो input tax credit नहीं मिलेगा. It will be received available only once the goods or services are received. The important aspect. Can we cancel the invoice under supply of service within 6 months? I think invoice cancellation mechanism नहीं है. Mechanism is to go for credit note. You cannot cancel the invoice. Cancellation आप same month के अंदर कर सकते हो. Related party का valuation कैसे निकलने का if एक ही party, sorry, what is the question? If एक ही पार्टी को सेल करते रहेंगे. Okay. देखिए इसमें what the law say is that you look at the open market value. अगर open market value नहीं है, then there are rules which say sequentially आपको जाना चाहिए. Then you need to look at a similar value in the industry. क्या हो रहा है? अगर वो भी नहीं है, then it says go for the reasonable valuation which can be cost plus 10%. ठीक है ना? तो आपको rule 27 से rule 31 को sequentially follow करना है to understand the valuation for related party transactions. Sir, very important proviso is there. If the recipient is eligible for full input tax credit, if recipient is eligible for 100% input tax credit, then the value declared in the invoice is deemed to be the market price. There will be no objection from the department on the value declared in the invoice. Correct. So what Rajesh bhai is bringing out के related party transaction में, हालांकि हम बोल रहे हैं कि भाई it should be a open market value, but एक proviso दिया है जहां पर बोला गया है कि अगर recipient को input tax credit मिलता है तो जो भी आपने value डाली है invoice में, that is related open market value, deemed to be open market value. ठीक है ना? Which is good. अभी यहाँ पर 2 issues important होते हैं. एक इशू क्या होता है कि recipient को क्या input tax credit मिल रहा है, full input tax credit मिल रहा है, ये हमको देखना चाहिए. Because अगर उसके business में कोई exempt supplies है तो कल के दिन डिपार्टमेंट बोल सकता है कि भाई recipient is not getting input tax credit and it is not revenue neutral. Point number 1. Point number 2 is that
व्हेन वी लुक एट दिस प्रोविजो, मैंने काफी क्लाइंट्स में देखा सर वो प्रोविजो है ना, हम तो 100 रुपए से निकाल रहे हैं, 1 रुपए से निकाल रहे हैं, 10 रुपए से निकाल रहे हैं। मेरे हिसाब से वो प्रोविजो को इंटरप्रेट ऐसे करना कि भाई वो प्रोविजो दिया तो अभी तो हम कुछ भी वैल्यूएशन करेंगे, 10,000 का मटेरियल भी हम 100 रुपए में निकालेंगे क्योंकि प्रोविजो है, इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रेटेशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको ऑब्जेक्टिव लिटरल इंटरप्रिटेशन कब लेना है और कब ऑब्जेक्टिव और पर्पसफुल इंटरप्रिटेशन लेना है लॉ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर आप एग्जैक्ट ओपन मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते, गो फॉर अ फेयर वैल्यूएशन। 10,000 की जगह 9,500 हो गया, ठीक है, 10,500 हो गया, बट इट कैन नॉट बी कि 10,000 वाला मटेरियल आप 10 रुपए में निकाल रहे हो क्योंकि प्रोविजो है। तो ये बहुत बड़ा लिटिगेशन आगे होने वाला है। करेक्ट राजेश भाई? Yes, absolutely, absolutely. Yes. Now let me go to the slides. I think some questions are coming, but I would like to cover my slides because, or I'll take the questions in the end. I'll give some time for questions. I'll look at the income items. तो ये हो गया बैलेंस शीट में। अगेन सी, जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं कि जो सर आपने बोला उतना ही चेक करना है, बहुत चीजें होती है चेक करने की। I'll tell you what I do. मैं कोई कंपनी का जब रिव्यू करता हूँ जीएसटी रिलेटेड, एंड व्हेन माय टीम डज द रिव्यू एंड व्हेन आई रिव्यू देयर वर्क, I take the trial balance. I simply take the trial balance and I run the trial balance right from top to bottom. एक एक लेजर में हमको सोचना चाहिए कि जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। Be curious, ask questions, and let me tell you, you will understand कि हर client में, हर industry में, हर the way the transaction has happened, there are various things that are required to be checked other than number matching. ठीक है ना, नंबर मैचिंग तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो करना ही है, बट ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये आपको देखना है। आपको ट्रायल बैलेंस निकाल के एक एक लेजर में समझना है कि इसमें क्या इंपैक्ट हो सकता है क्लाइंट को, क्या वैल्यू एडिशन हम क्लाइंट को दे सकते हैं, क्या ऐसी चीजें जो आज क्लाइंट की कॉस्ट हो रही है जो हम बचा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें जो क्लाइंट गलत कर रहा है, नॉन कंप्लायंट चीज हो रही है जिसको अपने को बताना चाहिए क्लाइंट को। तो ये आपको एक वेरी ओपन माइंड के साथ देखना होगा। मेनी टाइम्स आई सी दैट माय टीम मेंबर्स they go with a very fixed mindset. चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट में इधर ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना। अगर आप देखो, चेकलिस्ट इज अ मिनिमम थिंग्स टू बी चेक्ड, बट दैट इज नॉट द एंटायर और एग्जॉस्टिव थिंग्स। आपको ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक ओपन माइंडसेट से, एक सिंपल माइंडसेट से स्टडी करना है। वेरी ओपन माइंडसेट, डोंट ब्लॉक योरसेल्फ कि मुझे वो देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे कुछ आईटी से मिस हुआ क्या वो देखना है, मुझे आरसीएम रिलेटेड देखना है। नो, go with a simple mindset to understand that transaction, and let me tell you, then you will be able to do justice to the review of financial statements. Now coming to the income items. अभी इनकम आइटम्स में सबसे पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है कि टैक्सेबिलिटी चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, whether the transaction is liable to tax. Is it in the course or furtherance of business? I am sure कल के सेशन में कवर हुआ होगा, right? What is business? कहां पर हम बिजनेस बोल सकते हैं, कैसी चीजें हैं जहां पर इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एफओसी रिमूवल्स है, तो क्या सभी एफओसी रिमूवल पर जीएसटी लगेगा? आई हैव सीन प्लेसेस जहां पर कुछ भी चीज एफओसी में निकाला उस पर जीएसटी भर दिया। नो, if you are doing FOC removal as a part of a sales promotion scheme, 1+1, 2+1, 3+1, ये लिया तो इतना मिलेगा, वो लिया तो ये मिलेगा, this is not free, this is not FOC, and it is not liable to GST separately, but people are paying GST. Warranty replacement, is it free? No, the consideration is already taken in the previous transaction, but लोग वारंटी रिप्लेसमेंट पर भी जीएसटी भर रहे हैं। करेक्ट? Incentives, is it really incentive or is it a discount given by the supplier? There was a transaction जहां पर एक क्लाइंट को कंपनसेशन मिला था, 2 करोड़ का कंपनसेशन मिला, एंड दे केम के भाई ये कंपनसेशन पर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि इस पे टैक्स लगेगा और 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, 36 लाख रुपया जीएसटी जो आगे कस्टमर देने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी बिग कॉस्ट।
जब हमने वो कंपनसेशन का पूरा समझा कि ये कंपनसेशन कहां से निकल के आ रहा है और कोई भी क्यों देता है कंपनसेशन, वी रियलाइज दैट द कंपनसेशन केम बिकॉज ऑफ अ कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट ने, इन्होंने ऑलरेडी एक लिटिगेशन सूट फाइल किया था जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। एंड जब ये कंपनसेशन एज अ पार्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर मिलता है तो इट इज एन एक्शनेबल क्लेम। Actionable claim is neither a supply of goods nor a supply of service. तो हमको हर चीज क्वेश्चन करना चाहिए कि इस पे जीएसटी लगेगा क्या। एक्सपैट पेमेंट्स, काफी बार ऐसा होता है दैट कंपनी में फॉरेन एक्सपैट इंडिया में आकर काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो हम फॉरेन उसके बैंक अकाउंट में देते हैं। और देर आर कंपनीज हु आर पेइंग दिस टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बट एक्चुअली वो पे करने की नीड नहीं है। देयर इज अ जजमेंट इन द केस ऑफ फोक्सवैगन बाय द बॉम्बे ट्रिब्यूनल, मुंबई ट्रिब्यूनल, कि इस पे नहीं आएगा जीएसटी ऑन द एक्सपैट पेमेंट्स बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ सैलरी। एम्प्लॉय रिकवरीज, कैंटीन रिकवरी, ट्रांसपोर्ट रिकवरी, नोटिस पे रिकवरी, मोबाइल रिकवरी, इंश्योरेंस रिकवरी, टेलीफोन रिकवरी, आई डोंट नो व्हाट, यूनिफॉर्म रिकवरी, शूज रिकवरी, कितनी सारी रिकवरीज कंपनीज करती है एम्प्लॉइज से। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर द एम्प्लॉय रिकवरीज आर लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। Today we have got at least 5 advance rulings. Let me tell you advance rulings जो कि एसएससी के फेवर में और बोलते हैं कि एम्प्लॉय रिकवरीज पर जीएसटी नहीं लगेगा। Then is it worth analyzing? Because आज की डेट में हर कंपनी एम्प्लॉय रिकवरीज पर कम से कम 5 लाख से लेकर 20-25 लाख का कॉस्ट ले रही है जीएसटी का। Is it worth analyzing? अगर आप एक क्लाइंट का 25 लाख का साल का कॉस्ट अगर आप सेव कर सकते हो तो आपकी ये एक सजेशन में आपकी पूरी साल भर की फीस निकल गई। एंड फॉर नेक्स्ट 5 years or 10 years client would say that I want you to be my consultant because you are not the one who every time come and say ये भरो ये भरो ये भरो। You also come and say कि सर ये बच सकता है, ये बच सकता है, ये सेव हो सकता है। Look at the value addition for the client. Empathize the client. क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझो। करेक्ट? So read, there are 5 judgments on employee recoveries which says that GST is not applicable. And one of the reason that is given in the judgment is that it is not in the course or furtherance of business. I'm not recovering this in the course or furtherance of business. It's a statutory requirement, whatever. Exempt supply. अगर कोई पर्टिकुलर चीज में क्लाइंट एग्जाम ट्रीट कर रहा है, उस पर जीएसटी नहीं भर रहा है, तो हमको वो नोटिफिकेशन खोलनी होगी। नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 12 वो खोलनी होगी और वो रीड करनी होगी कि भाई ये एग्जेम्पशन बराबर है क्या। वेदर एग्जेम्पशन जो आ रहा है इट कम्स विद कंडीशंस, ये एग्जेम्पशन की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर एग्जेम्पशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आज आपको क्लाइंट को बताना होगा कि कल के दिन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू आस्क यू टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन। बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर क्लाइंट ने कोई ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट ट्रीट किया है, क्लाइंट ने कोई ट्रांजैक्शन पे 18% का 12% जीएसटी लगाया, 12 का 5% जीएसटी लगाया, तो आर वी गोइंग एंड ओपनिंग द बुक and see notification number 1, notification number 2, notification number 11, notification number 12, क्या हम ये notifications जाकर खोलकर देख रहे हैं कि भाई जो रेट लगाया बराबर लगाया क्या, जो exemption लिया बराबर लिया क्या। I am very much surprised, बहुत बार लोग क्या करते हैं, अच्छा इन्होंने बुक्स पे जीएसटी नहीं भरा, वेदर बुक्स इज एग्जाम, जाएंगे अपना गूगल खोलेंगे, वेदर बुक्स इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, गूगल ने आंसर दिया नो, हाँ नो। व्हाट्सएप पर किसी को ग्रुप में डाल के पूछोगे तो इस पे जीएसटी लगता है क्या, किसी ने बोला नो। अब उसने जो नो बोला उसको पता नहीं हमको कि उसने कितना पढ़ा है उसके बारे में, एंड हम आके क्लाइंट को बोलते हैं नहीं सर नहीं लगा। कैसे? मैंने गूगल में देखा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? क्लाइंट इज रिलाइंग ऑन योर वर्ड्स, करेक्ट? सर रवि सर, yes, same incidents I have observed recently. One of the chartered accountant has gone through the Google results for taxability. The turnover was more than 100 crore. The product was seat, motor vehicle seats. Motor vehicle seats they have classified under 9(4) under seats. And they googled ki seats are GST rate on motor vehicle seats. It comes to 18%.
as per Google. Hmm. And unfortunately, this rate was given for customs IGST tariff. They have used this because in customs tariff, it is specifically mentioned seats including motor vehicle seats. But in notification, GST notification, that including motor vehicle is not given. And department has classified this transaction under 8714. This is a very big issue. It's a big issue. More than 100 crores turnover. Correct. Totally agree. In fact, that was exactly my next point जो मैं ले रहा था. Automobile parts and components. हम लोग क्या करते हैं क्लाइंट प्लेस पर, हम क्लाइंट ने जो HSN ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, वो HSN का खोल के रेट देख लेंगे, हाँ रेट बराबर है, चलो ठीक है. बट वो HSN बराबर है क्या? Whether the HSN code identified by the client, is it correct? Let me tell you, classification is the most complex work in GST. And for doing one classification, you need to toil your, labor. I mean, you need to really do a lot of hard work for arriving at one classification. And clients pay us for that, right? We have clients who pay us at least 1 lakh for doing classification, only for doing classification for them. So that is a value that we must command out of our profession. And that will happen only when we dive deeper. Automobile parts and components today is a big industry, whether it a big issue in the industry, whether it will be classified as a constituent material or whether it will be classified as a parts or components of automobile industry. So rate of tax change हो जाएगा 18 से 28, 28 से 18. Correct? And वहां पर अगर जरा भी गलती कर दी, और समझ लीजिए अगर क्लाइंट का टर्नओवर 100 करोड़ है, तो we are talking about 10% into 100 crores, which is 10 crores tax. उस पे इंटरेस्ट जो आएगा वो अलग, और इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी. तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी मिलकर होता है 25 करोड़. एंड लेट मी टेल यू, इट इज वर्थ फॉर द क्लाइंट to close the business rather than paying this 25 crores. And what is the reason for closing the business? क्योंकि हमने टाइम पर क्लाइंट को HSN कोड सही नहीं बताया है. ये प्रैक्टिकली हो रहा है in Pune. Entire automobile industry is going through this aggressive investigations happening by the GST department, by the investigations team. Mixed and composite supplies. How many times we are going and actually seeing the agreements of the client to check what is the nature of supply? I'll give you an example. Let us say there is a company who is doing logistics and warehousing both together. Transportation भी करती है और material warehousing भी करती है. तो जहां पर मेनली उनको मटेरियल वेयरहाउसिंग करना है, स्टोरेज करना है, इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज टेम्पररी ट्रांसपोर्टेशन करना है, then it is a warehousing service. It is not a transportation service. On the contrary, transactions ऐसे भी होते हैं जहां पर मेनली आपको मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप टेम्पररी स्टोरेज भी कर दो, then it is a transportation service, not a warehousing service. Correct? Transportation is taxable at 5% and 12% respectively. Warehousing is taxable at 18%. See, goods बहुत important है. ये मोबाइल फोन है, आप देख सकते हो. ये पेन है, आप देख सकते हो. It's a pen, anybody can say. But service, you cannot see, you can only feel. So service is very dynamic. जो अभी हम कर रहे हैं, let's say I am giving a training to all of you. This is a commercial training and coaching service where a lot of you are asking me questions, I am answering. But still it is a commercial training and coaching service. अगर यही person, यही question आप मुझे मेरी ऑफिस में पूछो, it becomes a consulting service. And यही question you ask me in the course of departmental investigation, it becomes a personal hearing service. It becomes an auditing service. Same question, same answer, same persons, but the nature of service change. Correct? So service is a very dynamic thing. It's not black and white. It's always gray. तो वेदर जो क्लासिफिकेशन किया है वो बराबर है क्या? आज की डेट में रेस्टोरेंट्स, देयर इज सच अ बिग इशू कि आप अगर रेस्टोरेंट से कुछ बेच रहे हो, तो वेदर इट इज अ रेस्टोरेंट सर्विस और वेदर इट इज अ सेल ऑफ गुड्स,
डिपार्टमेंट का सर्कुलर इटसेल्फ इज टेलिंग टू डिफरेंट थिंग्स. डिपार्टमेंट का सर्कुलर बोलता है कि अगर आपने आइसक्रीम ऐसा दिया तो वो गुड्स होगा और वैसा दिया तो सर्विस होगा. Are you getting it? There are most of issues in classification. I think we need to take 3-hour session only on classification. But I'm just trying to give you a tip of the iceberg. कि क्या हमने क्लाइंट की क्लासिफिकेशन को कभी क्वेश्चन किया है? क्या हमने कभी क्लाइंट ने जो रेट ऑफ टैक्स लगाया है उसको क्वेश्चन किया है? हमको टाइम ऑफ सप्लाई देखना चाहिए. इनकम सब हम वेरीफाई करते हैं कि एडवांस पे जीएसटी भरा क्या, इनवॉइस कब हुआ, बराबर टाइम टू टाइम एडजस्ट हो गया क्या, whether it is a continuous supply of service, then what is the time of supply in case of continuous supply of service, because the law is different. Place of supply. Place of supply is the heart of GST. Again, one of the most complicated areas. And again, an area जहां पर हम लोग मिस आउट कर देते हैं. Job work transactions, performance based transactions, intermediary based transaction, training related transactions, event related transactions, immovable property related transactions. ये सभी में place of supply के implications आते हैं. And especially tooling related transactions में businesses are taking cost. Because place of supply India में हालांकि आप supply कर रहे हो to a foreign party outside India. Foreign party बोलेगा I am not going to bear your Indian GST. And this Indian party is taking 18% GST as a cost. Can we restructure the transaction? So these are all things that we need to look at. तो जब हम इनकम देखते हैं तो हमको देखना चाहिए भाई टैक्सेबल है क्या. अगर टैक्सेबल है तो बराबर पे किया क्या, एग्जेम्प्ट है तो बराबर एग्जेम्पशन लिया क्या, composite mix supply है तो whether it is a composite, whether it is a mixed, what is the principal supply, whether it is unbundled, whether it is naturally bundled, whether it is artificially bundled, what is the rate of tax, is it correctly charged, whether the HSN code itself is correct, whether it is a goods or whether it's a service, what is the time of supply, whether the tax is timely paid or there is a delay, what is the place of supply, whether the tax is going to the right state or whether it is going to a different state. आपने CGST, SGST, IGST लगा दिया तो जो पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को जाना चाहिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चला गया. It is wrong, correct? That is where your place of supply come into picture. जो एक्सपोर्ट ट्रीट करना चाहिए वो आपने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो एक्सपोर्ट ट्रीट कर दिया है. So all these things will be questioned. Type of tax, again the same thing which I mentioned. If you have paid CGST, SGST instead of IGST or vice versa, there is going to be issue. Valuation पे हमने already discussion किया है. Related party, these are the examples which I have given in the PPT. Related party transactions, there are issues in valuation. Secondary discounts, अगर आप secondary discount देते हो तो आप credit note दे सकते हो, valuation कम कर सकते हो, but then it must be recorded in the agreement. तो हमने जाकर वो agreement देखा क्या कि agreement में already ये discount देने का जो clause है वो लिखा गया है कि already. We need to check the agreement. We need to check whether the customer is reversing the input tax credit. There is a special valuation mechanism for motor vehicles. They need to pay GST only on the margin between the sale value and the depreciated value as per income tax. I have seen associates who have paid 28% plus cess on the sale of motor vehicle. और हालांकि उनको पे करना था, एक भी रुपया पे करने की उनको नीड नहीं थी, but they have paid 28% plus cess. क्यों? Because they have taken the wrong valuation. Joint development agreements and in case of builder industry. Today there is a very big issue on valuation. क्या valuation करना चाहिए? Every month we issue at least 2 to 3 opinions on only JDA कि क्या उसमें valuation करना चाहिए. Credit notes and debit notes. Another, very important aspect that we need to check. Especially debit notes, man. Credit notes, we all know that we can adjust and there is a time limit and blah, blah, blah. I'll tell you one major issue that is going to come in the case of debit note. अगर आपने invoice raise किया 2020-21 में और उसका debit note अगर आप आज raise कर रहे हो, correct? So the first question that you must ask to the client, whether you need to pay interest, whether interest will come, because supply तो already 20-21 में हो गई थी. Debit note आप आज raise कर रहे हो, तो will it lead to delay in invoicing?
What is the reason or root cause for this debit note? We need to dive into the details of the root cause for the debit note. There is already a Supreme Court judgment in the case of Steel Authority of India Limited that in case of price revision, debit note, it is liable for interest. Supreme Court larger bench judgment in 2019. And let me tell you, आज की डेट में ये प्राइस डिफरेंस, प्राइस एस्केलेशन रिलेटेड जितने भी डेबिट नोट्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज वो प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो व्हेन वी आर डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, इज इट नॉट अवर ड्यूटी टू आस्क फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर? Then we need to also check procedural compliances, invoices issue हुए क्या, e-way bill हुआ क्या, e-invoicing and all these other procedures. Lot of transaction structuring is possible in GST only if we dive deeper. Interest we need to verify. I have seen cases जहाँ पर client ने interest pay किया है, let us say 50,000 रुपया. तो क्या हमने वो वर्किंग्स फिर से रीचेक की कि भाई जो 50,000 कैलकुलेट किया बराबर किया है? I'll tell you, I have seen 7 out of 10 cases, the workings will not be correct and the client must have wrongly paid excess or short interest. This is what I've seen in my personal experience. Most of the times the interest calculations will not be correct what the clients do. So we need to re-verify the calculations. Penalties, wrong type of tax paid, all these things, I think we already talked about. Reconciliations, ये एक sample 7 to 8 reconciliations मैंने list की है, but I will not dive into the session of, I think, Yogesh, who is going to cover reconciliations. So let Yogesh take up. But this is only sample list. There are so many other reconciliation that we need to do on a periodic basis in GST. Now let us quickly look at expenditure items. Expenses में हमको क्या देखना चाहिए as far as GST compliances are concerned. Firstly, we need to review the expense ledgers. Expense की जो भी ledgers है उनको हमको review करना चाहिए कि भाई इस पे input tax credit लिया है क्या, वो जो लिया है वो eligible है क्या input tax credit, whether input tax credit reversal आएगा because it is ineligible or because there is an exempt supply, for what purpose this input tax credit is used, whether it is used for taxable business or for exempt business. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के केस में COGS में वो एंट्री जो पास होती है डायरेक्टली इन्वेंट्री ऑटोमेशन होता है एंड डायरेक्टली एट द स्टोर से एंट्री डायरेक्टली पास हो जाती है बुक्स में, तो आप अलग से उसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते हो. बट क्या हमने जाकर वो स्टोर पर्सन के साथ में बैठकर समझा कि उसके सिस्टम में एंट्री कैसे पास हो रही है, और वेदर देयर इज अ गैप इन दैट सिस्टम. Businesses do miss out on the input tax credit related aspect. काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. दिस इज रॉन्ग. Even employee related expenses you can claim input tax credit. Where is it mentioned that you cannot claim? Only what you cannot claim is food and beverages, catering services and all those things. Even canteen expenses, the credit is eligible if it is a statutory requirement under the Factories Act. तो ये जो मैंने लिस्टिंग की है, ये वो लिस्ट है जहां पर जनरली क्लाइंट्स को लगता है कि क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए हमको या नहीं मिलेगा due to various reasons. But let me tell you, we need to dive deeper in all these things. हमको दोनों चीजें चेक करनी चाहिए. एक तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो नहीं मिलने चाहिए लेकिन क्लाइंट ने लिए हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेल दैट इट इज नॉट एलिजिबल. एंड ऐसे कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो मिलने चाहिए लेकिन क्लाइंट ने इनएलिजिबल ट्रीट किया है. Even those things we need to identify because that is where the value addition is. Now similarly, reverse charge. एक्सपेंडिचर लेजर जब हम देखते हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स इंप्लीकेशन आएगा. These are few samples which I have put. Freight related, GTA transactions, goods transport related transactions. Whether all the transportation is liable to reverse charge or only those transportation which are in the nature of GTA that is liable. Correct? Ocean freight, whether उस पे GST आएगा नहीं आएगा, matter is pending before the Supreme Court.
गुजरात हाई कोर्ट का ऑलरेडी फेवरेबल जजमेंट है. I agree with the view given by the Gujarat High Court. Advocates, foreign payments, security, travel, forex gain loss ledger, sponsorships, services provided by government. तो ऐसे सभी एक्सपेंडिचर्स को हमको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि इस पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी क्या. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमेशा हमको कैश में पे करनी होती है. और अगर यही चीज आपने क्लाइंट को 1 साल बाद बताया या 6 महीने बाद बताया तो इट विल कम विथ इंटरेस्ट. इट विल कम विथ इंटरेस्ट. अगर समझिए फरवरी मंथ में क्लाइंट को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज का, आपने फरवरी में नहीं बताकर उनको अगस्त में बताया, तो क्लाइंट विल नॉट टेल यू थैंक यू कि आपने बता दिया, हमने पे कर दिया. क्लाइंट बोलेगा आपने बताया लेकिन इतना लेट क्यों बताया, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बिकॉज रिवर्स चार्ज इज ऑलवेज पेएबल ऑन कैश एंड एवरी टाइम द इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल. So we need to tell in February only that this is liable for reverse charge. और ये हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमारी GST और 3B जो हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, how much depth we are doing. And tomorrow session I'm going to cover on what is that we need to, or how we need to do this verification in GST or 3B. These are all the blocked credits that we need to dive deeper. Procurement structuring हम कर सकते हैं क्या क्लाइंट का. जो एक्सपेंडिचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कॉस्ट बन रहा है क्लाइंट के लिए, तो कैन वी आस्क द सप्लायर टू गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम. 18% की जगह 6% कॉस्ट होगा तो 12% बच जाएगा क्लाइंट का. वेरी बिग थिंग. बिल्डर इंडस्ट्री स्ट्रेट अवे सेविंग फॉर द क्लाइंट. रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. We need to see कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है, whether it is for the taxable business or exempt business, and whether it is directly for the exempt business or indirectly for the exempt business or indirectly for the taxable business. I'll give you an example. So there was a client in a dairy industry जहां पर उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर मशीन ली थी. तो मशीन was basically used for manufacturing curd. तो curd is exempt. तो उनको लगा कि मशीन का क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये तो इससे तो हम कर्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. बट जब हमने उनकी बुक्स में डीप डाइव किया हमने, तो हमको पता चला कि कर्ड से वो चक्का बनाते हैं और चक्के से अल्टीमेटली श्रीखंड बनता है जो टैक्सेबल है. तो अगर वो मशीन सिर्फ एग्जेम्प्ट बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है, वो मशीन से आगे टैक्सेबल बिजनेस भी हो रहा है, विच इज अ श्रीखंड, विच इज अ टैक्सेबल आइटम, and hence the input tax credit is proportionately eligible. तो ये चीजें अपने को डेप्थ में जानी हो पड़ती है, क्लाइंट का बिजनेस समझना होता है. हमको लगता है कि हम यहाँ ऑफिस में बैठ के बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस ले लिया, चलो क्लाइंट का ऑडिट करते, नहीं होता है. आपको जाकर क्लाइंट का फैक्ट्री विजिट करना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट्स देखना पड़ेगा, उनका बिजनेस समझना पड़ेगा. वी नीड टू go and talk to the operation guys, we need to go and talk to the CFO, we need to go and talk to the MD and understand their business. जब तक आप क्लाइंट का बिजनेस नहीं समझोगे, you will never be able to give a value added solution to the clients. आप वैल्यू एडेड सॉल्यूशन तभी दे पाओगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तभी दे पाओगे जब आप उनका बिजनेस समझोगे. अगर आप बिजनेस नहीं समझकर सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे, then you will give only havoc solution. क्लाइंट बोलेगा ये प्रैक्टिकली वर्केबल नहीं है जो आप बता रहे हो. करेक्ट. Understanding client's business is very important. I'll give you one more example. एक क्लाइंट जीटीए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में था हमारा, जिनका काफी उन्होंने ट्रक्स परचेज की थी. जो ट्रक्स पे उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया बिकॉज दे वेर अंडर रिवर्स चार्ज, तो उनका एग्जाम था और सामने वाला टैक्स पे करता था 5%, तो उन्होंने ट्रक्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया. लेकिन आफ्टर 1 ईयर दे रियलाइज कि भाई हमको रिवर्स चार्ज में नहीं रहना है, हमको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है, 12% हम लगाएंगे ऑन द ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो दे वेंट इनटू फॉरवर्ड चार्ज, बट दे मिस्ड कि जो हमने ट्रक्स पिछले साल परचेज की है उसका अब हम क्रेडिट ले सकते हैं बिकॉज अगले 4 साल हम टैक्सेबल में रहने वाले हैं. तो जो एक्सपेंडिचर था ऑन द ट्रक्स, you divide 12 months they were under reverse charge, you reverse the input tax credit, but 48 divided by 60 यानी कि 4 years, 4 divided by 5, they are eligible for input tax credit. They can take 80% of the input tax credit is eligible, and this is as per the section 18 of CGST Act. So these are the things that we need to identify and add value to the client's business.
And these are again the same things where, if the tax is wrongly paid, CGST, SGST, IGST pay kar. I've seen cases जहाँ पर client CGST, SGST की जगह IGST का credit ले लिया, या IGST की जगह CGST, SGST का credit ले लिया, and we are suggesting कि आप reverse कर दो credit. There is already a Gujarat High Court judgment that this is only a procedural lapse, and the credit should not be reversed. Broadly, I will touch upon notes to accounts. Notes to accounts say, and when I say notes to accounts, it's not just notes to accounts, it's also company's website. It's also annual returns of the company. Their entire annual submissions and filings, especially in listed companies, it is available. Annual report is available online. So we need to understand कि कितने business verticals हैं, कहाँ इनकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, सभी जगह रजिस्ट्रेशन लिया क्या, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अरे इनका कर्नाटका में भी दिख रहा है पर वहां तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, फिर हम जाके पूछेंगे तो बोले हाँ हमारा वहाँ एक छोटा सा डिपो है. सर आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए. इनके आगे के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, उसका आज हम कुछ टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं क्या. व्हाट इज देयर प्रोक्योरमेंट मिक्स, डोमेस्टिक कितना, इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी की कितनी कॉस्ट हो रही है, वहां पर कोई हम सेव कर सकते हैं क्लाइंट के लिए पैसा. सेल्स मिक्स क्या है इनका, लोकल कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, आगे कितना होने वाला है, तो आज रिफंड क्लेम करना चाहिए, नहीं क्लेम करना चाहिए, आगे यूज हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा. ये पूरी स्ट्रेटेजी हमको, जब तक हम वो उनके बिजनेस को नहीं समझेंगे, विल नेवर बी एबल टू गिव दिस सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स. रिलेटेड पार्टीज हमको पता चलती है नोट्स टू अकाउंट से, फॉरेन डिस्क्लोजर से हमको पता चलता है आरसीएम में क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, व्हाट आर द पेंडिंग लिटिगेशन केसेस, कंटिंजेंट लायबिलिटी से हमको पता चलता है. तो उसमें आपने रिप्लाई किया क्या, रिप्लाई की कॉपीज बताओ, क्या रिप्लाई किया, सर ऑलरेडी ये जजमेंट आया था, आपने क्यों नहीं लिया ये सबमिशन अभी रिसेंटली. जस्ट इमेजिन आप जाकर क्लाइंट का कोई लिटिगेशन मैटर देखते हो और आपने उनके पूरे सबमिशंस पढ़े और आप जाकर बोलते हो सर ये मैटर पे तो अभी रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया फेवरेबल. इट इज अ डिलाइट फॉर अ क्लाइंट, it is a delight for a client. And if you as an article student can give this suggestion, let me tell you, client will look at you differently. Client will ask you a question whether you are really an article or whether you have qualified. So don't underestimate yourselves. While this session is designed to give you some glimpse about what all things you need to check, but I would like to remind you कि अगर आपको लगता है कि ये 2 घंटे सेशन या फिर ये एक हफ्ते की सीरीज सुन लिया तो हम जीएसटी हम सब कर सकते हैं, आंसर इज नो. Unless you build a habit of reading on a daily basis, reading on a periodic basis, reading on a regular basis, you are not going to become experts in anything. So we have to read, and this is the only solution to become expert in whatever we are doing. Correct. So with this, I would like to conclude my discussion. I will take 5 to 10 minutes for Q&A. If there are any questions, I would like to answer them. अगर कुछ questions मैं answer नहीं कर सकता हूँ, but due to any reason, my email ID is visible on the screen. Please send me email. I'll be happy to answer your queries. Keep your questions very simple and crisp and not very large, because it will become difficult for me to analyze your questions. Okay. So let me take up few questions and then we'll close. We have 10 minutes. What can be done if B2B sale is shown under B2C in 2021 for which tax was paid by customer while filing annual return? B2B sale is shown under B2C in 2021. अच्छा, B2C में बताया और टैक्स पे नहीं किया था क्या? Because अगर B2C में बताया तो टैक्स ऑलरेडी पे हो गया ना. I am not able to understand then why the tax is again paid through annual return. But if what I am trying to say is अगर आपका B2C में गलती से रह गया तो you can always rectify that. But rectification की time limit है law के अंदर. अगर by chance वो time limit खत्म हो गई है and system is not allowing a rectification, in our view, that entire restriction by the system is not in line with the provisions of the Act. And in one of the case, only for this matter, we have filed a writ petition before Bombay High Court, where High Court has given the assessee 8 weeks time to do this rectification. Sorry, to the department. What will cover under SOP? Sir, SOP, see, SOP is like a standard operating procedure.
क्लाइंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है कि मेरे पास एक अकाउंटेंट है, अगर ये अकाउंटेंट छोड़कर दूसरा अकाउंटेंट ज्वाइन करेगा तो उसको कौन समझाएगा फिर से कि भाई कैसे करना चाहिए सब चीज। तो अगर यही चीज आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर दो एक एसओपी में, then I will use this SOP as a Bible for my entire taxation team. That is the importance of SOP. But very unfortunately, that SOPs are totally ignored in indirect taxation framework. Sir, please let me know how to take refund of export. It's online procedure. आपको RFD 01 online file करना होगा and you can get the refund in case of exports. It's nowadays it's quite simple as well. Capital goods, machinery, ITC adjust against sale GST liability. Yes, you can adjust. ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिजनेस का इसके अगेंस्ट होगा, रेंटल बिजनेस का रेंटल बिजनेस के अगेंस्ट। एक जीएसटी के नंबर के अंदर जो भी आपके आईटीसी और जो भी सेल आप एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक आइटम में आईटीसी मिलेगा, यस मिलेगा। Sir, when can we see all these judgments on regular basis? See, there are few good websites. Tax Management India एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। Tax India Online एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, but of course they are chargeable websites. I think one very good what you can do is CBIC की वेबसाइट पर भी उनका एक रेकनर अपडेट्स every week they release this updates related thing. तो वो भी आप पढ़ो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। And there are a lot of CA firms जो monthly updates निकालते हैं, legal updates, important judgments. So if you follow their websites, you'll be able to get the list of these judgments. Even Tax Guru is a very good website where you get a lot of these things. So up search karo and accordingly you can zero down on something. There are few websites, although they are very good, but they charge for those things. How to search HSN SSC? There's a request. Okay. Yeah. So I've tried to cover as many questions. Without any registration of IceGate, we can get refund export. I doubt, because now this refund is totally linked with IEC code. So I think you have to take IEC code and do that IceGate related formalities to get the refund of export with payment of tax. ITC utilized but not availed, does it attract interest? नहीं, आप अवेल नहीं किए तो यूटिलाइज कैसे करोगे? मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन रिवर्स है, अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऑलरेडी लॉ इज अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके, सी आपके पास आईईसी कोड होगा, बट देन यू नीड टू मेक श्योर दैट द आईईसी कोड में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी पुट अप इन द शिपिंग बिल वेरी क्लियरली। आपके बैंक अकाउंट से वो मैपिंग होनी चाहिए, और GSTR 1 shipping bill की completely there has to be the mapping, only then the refund would be smoothly eligible. There are so many cases जहाँ पर because of this incorrect mapping or wrong mapping, IceGate में customs में portal में refund अटके हुए हैं for the taxpayers. Client is liable for GST audit if the turnover crosses 5 crores and they need to do annual return if it is less than 5 crores but more than 2 crores. What if taxpayer has credit note of IGST and there is no sale to adjust against it? And there's no sale. हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, सिस्टम में माइनस अमाउंट रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है आज की डेट में, बट आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क आउट समथिंग एंड अलाउ दिस। बाय चांस बिल्कुल हो ही नहीं रहा है और माइनस में और आप नहीं डाल पा रहे हो, एज अ लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज टाइम लिमिट होती है हर चीज की लॉ में, you can disclose this as ITC and submit one letter to the department that this is what you are doing because of systems unavailability. Okay? So I think there are a lot of questions flowing. I've tried answering as much as possible. So Rajesh sir, Maushmi madam, over to you. Yes sir, sure. Yes sir. Yes, thank you so much, sir. This was a very insightful session and I hope most of the queries of the students were resolved. I would like to invite CA Nyaneshwar Kale, Chairman of Ahmednagar branch, to propose a vote of thanks. Thanks, sir. Good morning, everyone. And glad to have an opportunity to deliver a vote of thanks for the webinar on GST compliance training for articles by Vikasa Branch Pune. And jointly organized with Vikasa branches of Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhavnagar, Dhule, Latur, Nanded, Nasik, Pimpri Chinchwad, Ratnagiri, Sangli, Satara, and Solapur, etc. Total number of branches 15. And nowadays GST compliance is very important.
in our daily life while preparing the balance sheet, financial statements of any firm or any company. First of all, I would like to thank today's eminent speaker, CA Ravi Somani sir, sparing his valuable time to guide these articles, as well as CAs in practice also, for a topic on financial statements from the GST point of view, balance sheet, notes of accounts, etc. He has given detailed knowledge how to prepare financial statement from the point of GST. More than 230 participants in this webinar. Thanks to him, it is useful not only for the articles but also CAs who are practicing in GST. I would also like to thank Vikasa Chairman of Pune branch, CA Mosmi Shah, for giving this opportunity to our students to hear well-known faculty in this 7 days webinar. I would like to thank all the Vikasa Chairman for participating in this webinar. And last but not least, I thank for all the students for joining this webinar from various locations in these exam days. Thanks to all of you. Over to you, sir. Thank you so much, sir. With this, we conclude this session. Thank you all. Thank you. Thank you so Thank you, much, sir. sir.